Hi everyone and welcome back to my channel. If you're new here, I'm Anusha and thanks for joining me. So today I got this look for you guys, my go-to glam look. This is basically the favorite makeup look at this moment, and you can carry this look with sari and jeans, and also the Bengali New Year's is coming, so you can carry this look with any types of ethnic look. And before starting this video, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. So if you would like to see how I got this makeup look, then please keep watching. So I already moisturized my skin with vitamin E by Body Shop. Then I'm starting off with the primer. I'm using here the Maybelline Master Primer, and this is my favorite primer at this moment. I love this primer because it's like इसमें moisturizer and primer दोनों ही है, and it feels like so lightweight, and this is not heavy for foundation. You can carry this foundation in summertime, so that's why I love this primer. देन इस प्राइमर को सेट करने के लिए मैं यूज कर रही हूँ द NYX मैट फिनिश सेटिंग स्प्रे एंड स्प्रेइंग दिस ऑल ओवर माय फेस. देन फॉर फाउंडेशन आई एम यूजिंग द Maybelline Super Stick and my shade is Buff Base. I'm taking my damn beauty blender and I'm just bouncing that all over my face. This foundation for me lasts so well on my skin. I once worked for something ridiculous like 10 or 11 hours and my base was like looking so good. एंड जिन लोगों का ऑयली स्किन है उन लोगों के लिए फाउंडेशन बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि मेरी स्किन बहुत ही कॉम्बिनेशन है. सो कुछ कुछ एरिया पे मेरी ऑयली होती है एंड कुछ कुछ एरिया पे ड्राई होती है. एंड ये फाउंडेशन बहुत ही मैट फिनिश है जो समर टाइम के लिए बहुत ही ग्रेट है. Then for the concealer, today I'm using two concealer. One is from the Maybelline Aged White and one is the Maybelline Brightening Creamy Concealer. And मैं सबसे पहले the Maybelline Aged White concealer को अप्लाई करूँगी underneath my eyes, my forehead, bridge of my nose, my cupid's bow, around my mouth, my under contour would be. and उसके बाद मैं जो ब्राइट क्रीमी कंसीलर है उसको भी मैं अप्लाई करूँगी एंड इसको मैं मेरी आईलिड पे भी अप्लाई करूँगी. मेरी एज रिवाइन कंसीलर की शेड है सैंड एंड जो मैं क्रीमी कंसीलर यूज़ कर रही हूँ उसका शेड है 20. एंड मैं ब्राइट अंडर आई पसंद करती हूँ, दैट्स वाई मैं ज़्यादा ब्राइट शेड अप्लाई किया हुआ आज. एंड इसको मैं डैम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई कर रही हूँ. अगर आप लोग ज़्यादा ब्राइट अंडर आई पसंद नहीं करते हो तो आप. Now to set all in place, I am using here the Rimmel Stay Matte Powder and I am applying this all over my face. आज मैंने कोई भी बेकिंग पाउडर नहीं यूज़ किया है क्योंकि इंडिया पे इतनी गर्मी पे अगर आप बेकिंग पाउडर यूज़ करेंगे तो फाउंडेशन के ऊपर जो क्रीज लाइन होती है वो आप लोग देख पाएंगे, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है. देन आई एम यूजिंग द फ्रीडम प्रो ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट. आई एम यूजिंग दिस brown shade and I love this brown shade guys. and मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ मेरे कंटूर एरिया पे जहाँ जहाँ पे मैं कंटूर करना पसंद करती हूँ एंड ऑल्सो मेरी नोज पे भी
gorgeous shade and this is such a unique shade guys। एंड मैं इसको एक फ्लैट आई शेडो ब्रश से अप्लाई कर रही हूँ जो मैंने आईलिड तक जो अप्लाई किया था एंड इस शेड को मैं आई क्रीज तक अप्लाई करूंगी। Then I'm taking this shade for my crease and I'm blending this all over my crease एंड जो मेरी आईलिड पे जो मैंने अप्लाई की थी दोनों शेड को वो मैं थोड़ी सी ब्लेंड कर रही हूँ ताकि दोनों कलर ही ब्लेंड हो जाए बहुत अच्छे तरीके से। Then I'm using the Lakme Iconic Kajal and I'm applying this my lower and upper waterline. Then मैं मेरी लोअर लैश लाइन को सेम काजल से मैं स्मच कर रही हूँ। मैं इनर कॉर्नर को ज़्यादा थिक नहीं कर रही हूँ, आउटर कॉर्नर को ज़्यादा मैं थिक करूँगी ताकि एक जो बोल्ड लुक है वो बहुत अच्छे से दिख पाए। एंड जो मैंने काजल लगाई थी उसी से मैं इसको ब्लेंड कर रही हूँ, मैं कोई भी एक्स्ट्रा काजल यूज़ नहीं किया है। Then I'm taking this black shade and मैं जो स्मच की थी उसके ऊपर मैं इसको ब्लेंड करूंगी थोड़ी सी। Then I'm taking this shade again and उसके बाद जो स्मोकीनेस है उसको थोड़ी सी मैं दिखाऊंगी एंड थोड़ी सी इसी से ही इसी शेड को मैं विंग्ड आईलाइनर की तरह अप्लाई करूंगी। नॉट नीट एंड क्लीन, जस्ट लाइक अ लाइन with the brown eyeshadow. मैंने lashes भी पहनी हूँ, this is from pack 75. Then I'm taking this black shade again and जो मैंने eyelash पहनी है उसके ऊपर just as a liner मैं इसे अप्लाई कर रही हूँ एंड थोड़ी सी इसी black shade से मैं winged eyeliner कर रही हूँ। It's like a fake winged eyeliner and I love this technique guys. देन मैंने एक ब्रश से दोनों कलर को जो मैंने ब्राउन कलर पहले लगाई थी एंड जो ब्लैक शेड को दोनों को ही मैं अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ। फॉर मस्कारा आई एम यूजिंग द Maybelline Lash Sensational Mascara and I am applying this my lower and upper lashes. Then I am taking this gold shade and मैं इसको अप्लाई कर रही हूँ मेरी इनर कॉर्नर पे थोड़ी सी ब्राइट दिखाने के लिए आई को। Then for the lip, I'm using the NY Lip Crayon and my shade is Bad Guy's Choice. आज मैंने जो प्रोडक्ट यूज़ किया है तो सबका लिंक एंड डिटेल्स मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बार में दे दिया हो, so please guys check this. Now I'm wearing this beautiful jhumkas. I think the lip color is little bit pinkish, so that's why I'm using this brown shade from Maybelline. And my shade is toasted brown and मैं इसको just lightly apply कर रही हूँ ताकि pink and brown दोनों ही अच्छे से blend हो जाए। So this you guys is my go-to at the glam of the moment using some of my favorite products at the moment as well. I hope you guys enjoyed this video. I am success with this makeup, like I don't know what I'm gonna stop wearing this look because I just love how easy and quick and glamorous it is. Guys, I love the highlighter. You can see the actual glow on my face and it's not like too much sparkly and not like that. It's so natural and it's so unique shade. I really hope you guys enjoyed this video and this makeup look. Please leave me comment below of what you would like to see next on my channel and don't forget to subscribe to my channel. So I will see you in my next video. Bye.